अब हम बात करेंगे सेल कल्चर लेबोरेटरी के हवाले से। सेल कल्चर लेबोरेटरीज जो हैं ये नॉर्मल या कन्वेंशनल लेबोरेटरी से थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं, बिकॉज इन लैब्स में हमें एसेप्टिक वर्क एरिया मेंटेन करना है और प्रेफरेंस हमेशा यही होती है कि सेल कल्चर एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये सेल कल्चर फैसिलिटी एक अलग से डेजिग्नेटेड रूम में या लैब में बनाई जाए। लेकिन समटाइम्स कुछ लार्ज लैब्स होती हैं, उनमें एक स्पेसिफिक एरिया जो है उसको डेजिग्नेट कर दिया जाता है फॉर परफॉर्मिंग दिस मेथड ऑफ सेल कल्चर। सेल कल्चर हुड्स आर मैंडेटरी टू प्रोसीड फर्दर विद दिस मेथड। क्लासिफिकेशन देखी जाए तो 3 किस्म के कल्चर हुड्स यूज होते हैं। कल्चर हुड ऑफ क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ work or nature of the cells, we decide which class of the hood can be used. अगर class 1 की बात की जाए, class 1 hood protects the personnel in the laboratory as well as the environment, but it has no ability to protect the cell culture from contamination. इसका अगर principle देखें तो this is more or less like the chemical fume hood that can be used as class 1 hood as well. क्लास 2 हुड देखा जाए तो इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर BSL-1, BSL-2 and BSL-3 labs. That means different level of biosafety in the lab. Depending upon the nature of the cells, depending upon the microorganism under study, we use this hood number 2 class 2 hood in the cell culture lab. This hood provides protection to the personnel, to the environment, as well as it protects the cells from any kind of contamination. Class 3 biosafety cabinets, highest level of safety. These are gas tight hoods because these are used in BSL-4 level labs. BSL-4 level labs are the highest security level or safety level labs in which we work with those pathogenic organisms which are known to create lethal problems to the human beings. So उस सूरत में हम BSL-4 labs में class 3 के hoods को use करते हैं. Class 3 hoods, they provide protection to the personnel, they provide protection to the environment and to the cell culture, protect it from the contamination. अब हुड में जो एयर फ्लो है दैट डिटरमिन्स हु इज प्रोटेक्टेड. हमारे पास 2 डिफरेंट वे आउट हैं टू हैव द एयर फ्लो. एयर शुड फ्लो थ्रू अ HEPA filter. अब HEPA filter is going to filter number of suspended particles, atmospheric particles, so as which can be the major source of contamination in the cell culture. So the air is free from the suspended particles, from the contaminants, and then the flow of air can be horizontal in the direction of the work. That means from left to right, from right to left, or it can be vertical from top to bottom or from bottom to top. The main point is that it should pass through the HEPA filter. There is another direction of flow, but that is normally not used. That is towards the worker or towards the researcher who is working on that bench, because that can create problem to the researcher. So clean benches यूज किए जाते हैं और इनमें फिर हमें डिटरमिन करना है हॉरिजॉन्टल लैमिनर फ्लो, वर्टिकल लैमिनर फ्लो, क्लीन बेंचेस को यूज करना है या फिर बायोसेफ्टी कैबिनेट्स को. व्हेनेवर वी वर्क विद द सेल कल्चर ऑलवेज use biosafety cabinets. बाकी जितनी options हैं they can be used for storage of the chemicals which are not going to be used with the cell culture. Then discharge of air from the HEPA-filtered is required. The direction of flow can be determined. It should not be towards the researcher so that the researcher can be protected from any potential hazards.